welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Lakme Fashion Week Summer Resort 2019 के ओपनिंग शो में नजर आए करण और तब्बू. देखिए फेमिना स्टाइलिस्टा वेस्ट 2019 के ग्लिम्सेस. टीच फॉर चेंज एनजीओ को सपोर्ट करने पहुंचे बी-टाउन स्टार्स. ट्यूसडे इवनिंग फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता के फैशन शो के साथ शुरुआत हुई लैक्मे फैशन वीक समर रिसोर्ट 2019 की. The opening show took place at the Royal Opera House, जहां फिल्ममेकर करण जौहर और एक्ट्रेस तब्बू बने गौरव के शो स्टॉपर्स. यहाँ करण अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करके थोड़ा इमोशनल भी हो गए. It's a really emotional moment for me because I have so many memories of watching movies in this particular space. Opera House is where, as a child I've come in several times, watched movies, and I can't believe that this has now transformed into this hugely iconic space. And just walking the ramp in this particular makes me feel like life is completing an entire circle. When I speak about life in circles and orbiting around things that are beautiful, I always think of Gaurav Gupta. He truly is somebody who I completely resonate with because it's fashion with an edge. It's out there, it's yet contemporary. So it's a bit of balance of kind of holding back and yet pushing through. And I think Gaurav does that so efficiently. He truly, I think, it was really waiting for me to kind of collaborate with him because I've been wearing his clothes recently, a lot of them, enjoying every bit of them. And I think I just love the drama he exudes. I tried on this outfit yesterday, and the first time I got into it, it fit me like it was made on my body. And we did not need to try another garment. That says a lot about him and his craft and his skill and his understanding of the body and the person that he's dressing. And it's been really exciting and wonderful to walk, especially in this, like Gaurav said, magical space. It will be something that I'll remember for a long time. गौरव की इस कलेक्शन का नाम था The Unfolding, जहां इस फैशन शो के साथ गौरव ने मुंबई रनवे पर करीब 4 साल बाद कमबैक किया. वहीं इस बार गौरव ने अपने डिजाइन और प्रेजेंटेशन पर भी खास ध्यान दिया. करण और तब्बू के अलावा यहाँ गौरव को सपोर्ट करने पहुंची एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और डायना पेंटी जैसे स्टार्स भी. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई. कल शाम मुंबई में होस्ट किया गया फेमिना स्टाइलिस्टा वेस्ट इवेंट. इस प्रेस्टिजियस ब्यूटी पैजेंट इवेंट को जज करने यहाँ पहुंची थी वानी कपूर, तापसी पन्नू एंड नेहा धूपिया, जिन्होंने हमारे साथ किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट. यहाँ वानी ने हमें बताया how was her experience judging a pageant event for the first time. This is the first time and I'm surprised they called me as one of the judges for this. Why are you surprised? Well, because I don't know if I'm the best. I don't know if I'm the best person to be judging other people's style, but it feels good and I feel really honored. वानी ने हमसे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के साथ अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म के डेवलपमेंट के बारे में भी की बात. So I've shot a lot for the film, and it's been one of my greatest experience, and it's been wonderful working with two powerhouses like Hrithik Roshan and Tiger Shroff, and it's just amazing. I'm equally excited to see the film as much as maybe their fans are. You'll get to see a lot of action. You'll get to see beautiful locales of these beautiful exotic locations. I'm also looking forward to it. नेहा धूपिया ने भी इस इवेंट को जज करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट की शेयर. Yes, I will be, and I'm very, very excited to be here tonight. I don't know what to expect, except a wonderful evening. Neha was recently blessed with a baby girl. In our exclusive interaction, she also spoke about her newborn and the experience of finally turning a mother. Great. I'm full of love right now and short of sleep, but yeah, I'm not complaining.
लास्टली तापसी पन्नू ने हमारे साथ बात करते हुए बताया क्या होगा उनका इस इवेंट को जज करने का क्राइटेरिया। I think I want to see who's going to be owning their style or they're just doing it for the sake of fashion trend, because it's a different thing to be fashionable, it's a different thing to be stylish. So I think that is what I'm going to keep in mind before I announce my winner. चाहे पति पत्नी और वो के रीमेक से बिना मेकर्स के इन्फॉर्म किए निकाले जाना हो या फिर उनकी अनुराग कश्यप डायरेक्टोरियल वुमनिया के शेल्फ होने की स्पेकुलेशंस हो, तापसी पिछले कुछ दिनों से लगातार कंट्रोवर्सी से घिरी रही हैं। However, जब इन कंट्रोवर्सीज के बारे में हमने उनका एक्सक्लूसिव रिएक्शन लेना चाहा, तो तापसी ने कुछ ये जवाब दिया। I'll send you the link of my entire interview. I've said everything in that. I've not hidden anything in that. For Nikita Vadhavan, Zoom, Mumbai. इस हफ्ते रिलीज हो रही है राजकुमार राव, सोनम कपूर, जूही चावला और अनिल कपूर स्टारर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और ट्यूसडे को जब इस फिल्म के मेकर्स ने ऑर्गेनाइज किया इस फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट, तो यहाँ राजकुमार, जूही और अनिल से मिलने उनके कई फैंस भी पहुँचे। इस प्रमोशनल इवेंट के बाद सोनम और राजकुमार पहुंचे अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करने, जहां आर बाल्की, फातिमा सना शेख जैसे कई और स्टार्स भी पहुंचे थे। It's not out of the box. It's just a film that has to be done, and it was done so intelligently by Shelley. I think it's hats off to her, and hats off to all the stars who are doing it so naturally and so effortlessly. बहुत ही प्यारी लगी है। मुझे मना किया है कि कुछ फिल्म के बारे में ना बोलूं, नहीं ऐसा नहीं है, बट आई होप कि बहुत लोग जाके देखें ये फिल्म, बिकॉज ये लोगों की सोच बदलेगी, और अगर 10 में से एक इंसान भी उसकी सोच बदलेगी और लोगों को एक्सेप्ट करें तो अच्छी बात है। फिल्म बन गई है तो अब नर्वसनेस का फ़ायदा नहीं है। अब तो फ्राइडे को कुछ 2-3 दिन बचे हैं, सामने आपके आ जाएगी फिल्म, लेकिन हमें बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ट्यूसडे को मुंबई में अपने फ्रेंड्स के लिए होस्ट की अपनी रिसेंटली रिलीज्ड तेलुगु फिल्म F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन की स्क्रीनिंग, जहां तमन्ना के पेरेंट्स के साथ ही नजर आए श्रुति हासन, प्रभु देवा जैसे कुछ और स्टार्स। ये फिल्म बहुत ही अच्छी रिसीव हुई तेलुगु में। इनफैक्ट इट्स touched 100 crores, so I think I was really excited about it and I said I have to share it with my friends in Mumbai. एंड ये एक ऐसी फिल्म आई थिंक जो सभी को समझ में आएगी, बिकॉज बहुत ही शादीशुदा मर्दों की लाइफ कैसी होती है। थिंक नाउ आई थिंक ऑलरेडी एवरीबडी इज कनेक्टेड, बिकॉज दैट इज आई थिंक सम यूनिवर्सल इमोशन एंड यू डोंट नीड लैंग्वेज फॉर दैट। So yeah, it's quite a cool film, and I'm waiting for all my friends to come in, and I hope they watch the film and enjoy the film. I only called her and asked her, I want to see F2, the film, please arrange for some show or something. Then she told me, no, I'm coming. Yeah, I'm here only, I'm coming. Bureau Report, Zoom, Mumbai. तापसी पन्नू, रकुल प्रीत, सूरज पंचोली, अदा शर्मा और जया बच्चन जैसे कई और स्टार्स टीच फॉर चेंज एनजीओ को सपोर्ट करने पहुंचे। The NGO works to improve literacy and reading skills among children from low-income communities studying in government schools. इस दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जया बच्चन ने भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और शेयर किए अपने व्यूज। While you're teaching children, please try and also get teachers. It's very important. Most of the government schools don't have teachers. There are about first, second, third, four classes being run by one teacher. It's terrible. And as Geeta ji just said, that yes, toilets for women. I'm not here to make a political bhashan. I'll start that in March. But we have been talking about Swachh Bharat, toilets, blah blah blah, education. Where are we? You have to tell the politicians to stop it, and they can only stop if you succeed. And I'm not here as a politician. I'm here as an actor, as a human being, and as a supporter.
During this event, इस इनिशिएटिव की ब्रांड एम्बेसडर अदिति राव हैदरी ने भी Zoom से एक्सक्लूसिव चैट की और टीच फॉर चेंज के साथ अपने एसोसिएशन के अलावा भी कई टॉपिक्स पर बात की। We are at a very special event and we have with us the co-founder of Teach for Change, Mr. Chaitanya, and we have with us the brand ambassador who is Ms. Aditi Rao Hadri. How important is this at today? You know, I think it's a absolutely wonderful program that Chaitanya and Lakshmi have started, and I actually got introduced to it only last year. I do everything from the heart, so for me it's such a lovely thing, and I think just to be with all those children and to be able to share your privilege with them and to make sure that they grow up empowered so that they can make their own decisions, they can be happy being unique, they can take the path that they want to take with courage, by being fearless. It only comes with an education, and it comes with holistic education, whether it's gender, sex education, whether it's socialization, whether it's whatever, an inclusive, wholesome education rather than just mere literacy. The majority of children go to government schools, and it's our responsibility to take care of them. I invite all the viewers to visit our website teachforchange.in and fill out the application form. There are a lot of people out there who want to make a difference but do not know how to make a difference. This is a platform. You don't have to pay anything, you don't have to do anything. We'll give you a school which is close to your house, and you just find about 2 to 3 hours in a week and about 60 hours in academic year and T. Today we saw a lot of actresses from South, who have been closely associated with the campaign. Will you be spreading awareness among the among the Hindi film industry? I hope so, because it's not about South, North, West, East. It's about people, and it's about people who believe in this, and we all have to work from the heart, and it's something that we have to prioritize because it's the only way forward. You have to have an educated generation, and we have all had the privilege of good education and a good sort of a secure background, and which is why we are able to make the choices that we are able to make. And every child deserves that right. Lastly, Aditi, you've always stood up for what is right. Even during the Me Too movement, you shared your thoughts on social media. You got great support for it. But do you think, I want to ask you this, do you think a lot of names have come up, but do you think that it's unfair or it's sad that a lot of perpetrators are still out there? I do feel that there is a beginning of the movement, but it's just the beginning. There is so much more that needs to happen. And the first thing that needs to happen is people need to stop bullying people. Again, it's about choice and consent. Nobody should force anybody to do anything that they don't want to do. Whether it's speaking, whether it's favors, whether it's nothing. So whether it's anything else. So I would say that that's what's really important just now, and we need to be sensitive to that. Any last message for the viewers about any short message that you want to tell the viewers? I would just say that education is a priority. Holistic, wholesome education is a priority in our country. And the education of the girl child is the most important, because you educate a girl, you educate a mother, you educate the entire family. For Sandesh Agte, Zoom, Mumbai. एक्टर अनिल कपूर आजकल बिजी हैं अपनी फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के प्रमोशंस में, और रिसेंटली जब अनिल अपनी डॉटर सोनम और को स्टार्स राजकुमार राव और जूही चावला के साथ इस फिल्म को प्रमोट करने एक रेडियो स्टेशन पहुंचे, तो यहाँ अनिल कुछ इस तरह क्राउड को एंटरटेन करते नजर आए। कृति सैनन और कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली अटेंड की अपनी फिल्म लुका छुपी की रैप अप पार्टी, और इस रैप अप पार्टी में इन दोनों ने दी इम्प्रॉम्प्टू डांस परफॉर्मेंस। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली अपनी एक टीनेजर फैन की विश की फुलफिल। Shraddha's this little fan was diagnosed with 3rd stage of tuberculosis, और जब श्रद्धा को एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ये पता चला कि उनकी ये फैन उनसे मिलना चाहती है, तो श्रद्धा ने अपने हेक्टिक स्केड्यूल से टाइम निकाला और इस मीटिंग के बाद किया ये पोस्ट शेयर। Hi, this is Uma Qureshi and you're watching me on Style Diaries. A style tip, I think, be who you are.
no matter if something is in trend or in vogue, don't go for it if it does not suit your budget or your personality. There is no point aping low-waist jeans if it doesn't work for you. Make something work for you and you will stand out and people will notice. I would have to say my mother's given me a lot of her jewelry, including some beautiful necklaces, which I don't really wear because I'm not a big necklace person. But that's family heirlooms that have been passed down. And one is this beautiful Polki diamond set, which I absolutely love. Maybe I'll wear it on my wedding day, who knows. I love sales. I can never say no to a good bargain. In fact, I overspend when there's a sale going on, even if I don't need anything. But I'm not a big shopper. I shop on vacation. So whenever I'm holidaying, I shop a lot. But when I'm in Bombay, I don't end up shopping so much. I have a stylist or somebody do that for me. To a date night, a black dress with some nice earrings. Lunch outfit with friends, I would just wear something like a white shirt, jeans, my veg heels, a big bag, that kind of a thing. You know, my go-to anywhere look is my gym wear. So I'll just wear like a nice big hoodie and I want to wear my sneakers and I want to wear my nice like Lululemon tights and I'm set for any meeting, any airport look, anywhere. When I get dressed in the morning, I think, I don't think actually, it depends on my mood. Like if I wake up feeling like exceptionally quirky and I want to mix up my outfit and like maybe just wear red lipstick for no reason, just because I feel like wearing red, I do it. So I don't think you need an occasion or a purpose to dress up. You should just, I dress up for myself. And then there are days no matter what happens, I'm like the most shabbily dressed person ever. So I basically oscillate between doing a red carpet appearance and looking like a homeless person very easily. I have these amazing t-shirts that I have forever, and now I know it's really in vogue to have all these t-shirts which are like torn with holes and cuts and rips and stuff. I have a couple of pairs that were not intended to be that. I think over the passage of time it has become that, but I just find them so comfortable. Coming up on the show, Ekta Kapoor के किस शो से खफा हुए फैंस? क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फिल्म से एक्शन सीन्स को किया जा रहा है एडिट? क्या सिद्धार्थ फिलहाल नहीं करना चाहते ए-रेटेड फिल्म? बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो आजकल ड्रामेटिक लव स्टोरी मरजावा की शूटिंग में बिजी हैं, इस फिल्म में रोमांटिक सीन्स के साथ ही कई एक्शन सीन्स करते हुए भी नजर आएंगे। पर सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के मेकर्स नहीं चाहते कि सिद्धार्थ की इस फिल्म में हो ज्यादा एक्शन सीन्स। आपको बता दें कि मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ रितेश देशमुख और न्यूकमर तारा सुतारिया भी नजर आएंगी। और क्योंकि ये फिल्म बेस्ड है ऑन अ थ्रिलिंग गेम ऑफ लव एंड डेथ, ऐसे में इस फिल्म में होंगे कई फाइट सीक्वेंसेस विद अ लॉट ऑफ ब्लड एंड वायलेंस, जिससे अब फिल्म के मेकर्स रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है कि मरजावा के मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म के एक्शन सीन्स की वजह से उनकी फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मिले ए सर्टिफिकेट। अपेरेंटली फिल्म के मेकर्स का मानना है कि अगर मरजावा को CBFC UA सर्टिफिकेट देती है तो ये फिल्म हर एज ग्रुप की ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। हालांकि जब इन रिपोर्ट्स को कंफर्म करने के लिए हमने इस फिल्म की टीम से बात करने की कोशिश की तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत, जो ऑन स्क्रीन अपने बोल्ड रोल्स के लिए मशहूर हैं, अब जल्द ही कॉमेडी करती हुई नजर आएंगी। सोर्सेस की माने तो मल्लिका, जो पिछले काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं, जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अपकमिंग वेब सीरीज में तुषार कपूर और कृष्णा अभिषेक और किक्कू शारदा जैसे स्टार्स के साथ कॉमेडी करती नजर आएंगी।
डेली सोप क्वीन एकता कपूर मशहूर हैं अपने टीवी शोज में नए-नए ट्विस्ट्स और टर्न्स के लिए। जहां एकता अपने शो की स्टोरी लाइन के साथ करती हैं नए-नए एक्सपेरिमेंट्स, वहीं एकता के लेटेस्ट शो कसौटी जिंदगी की सीजन 2 में भी एकता कर रही हैं कहानी में नया ट्विस्ट लाने की कोशिश। पर लगता है एकता के ये एक्सपेरिमेंट्स फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं और इसीलिए वो सोशल मीडिया पर इस शो पर तरह-तरह के कमेंट्स करके निकाल रहे हैं अपनी भड़ास। हाल ही में एक फैन ने हर हफ्ते शो की स्टोरी में होने वाले चेंजेस से परेशान होकर कुछ इस तरह एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग।